Hi, Hello, how are you? I'm great. How are you? Good to see you again. Same here, same here. You're looking so pretty. Thank you so much. Not at all. You are What's prettier. You're much, much prettier. Anyways, thank so evening today, and people are joining us for a session on nail and pit care, and you will be taking us through with lots of questions. Yes. So Let's let's begin. So, guys, those who are new, I'll just introduce you guys to the whole thing. So, Moha Save Our Skin or SOS is a series of live Instagram session where we invite eminent experts from the field of dermatology, cosmetology, Ayurveda, and yoga. It is an amazing initiative by Charak Pharma, who are the country's experts in Ayurveda. We have today our special guest, who is Dr. Manisha Mishra, with rich practice of 20 years in Ayurveda. She's MD in Ayurveda and she's also a consultant to Charak Pharma. So today she'll help us to nail the topic about in a holistic way about nails, hands and feet concerns in Ayurveda way. So let's begin. Yes, doctor. Yes. You Oh, know, Ayurveda is so amazing. It has a lot to say about nail and feet care. It is so important in the process of diagnosis also. We all know, I think everybody who's been on the internet knows ki Ayurveda talks about body types, certain body types. So mm, nail also plays a very, very important, my nose is getting itchy today. Nail also plays a very important role in deciding what kind of personality you are. mhm, So people who have very generally there is a nail which has to be a little soft, pink, equal in shape, and strong enough to handle all the pressures the hand and feet go through. So if it is not so, then there is a problem. So people who basically are very active and जो वायु बोलते हैं जिनमें mhm. वायु ज्यादा है, they will have a little dry hair which will chip often, which will be brittle कि थोड़ा सा आजकल our hands are tools and our feet are locomotives. So हम इससे आप बटन भी खोल लेते हैं, आप डब्बे भी खोल लेते हैं, दिन भर you can work on social media, the thumbs and the fingers, and we put them through so much of problems. So people who already are vata pradhan, they will break nails easily. तो उनके थोड़े brittle, थोड़े से पतले, not very pink, dry और जल्दी से काले होने वाले होते हैं. जो पित्त प्रधान होते हैं उनके एक्चुअली पिंक, सॉफ्ट, प्लायबल, थोड़ा मूव कर से फ्लेक्सिबल वैसे नाखून होते हैं. एंड कफ प्रधान जो होते हैं जनरली विद कफ dominant constitution, they will have nice, thick, strong, sturdy nails with which they can try and claw you if they want to. They're very, very strong. So these are the kind of nails we have talked about. And usually आप इन्हीं में nails देखेंगे कि अब problem कहाँ होती है जब हम nail care नहीं करते हैं या there are many causes our nails or hands could be looking very dry and problematic in the winter. Skin is different है ना यहाँ पे there is a lot of fat, either there are fat paddings, Hmm. back of the hand there is nothing, and with this hand आप सुबह से शाम तक if you see you do so many things. I just told you you're cleaning, you're cooking, you're writing, you're opening doors, so they have to be strong and tensile. और ये इसलिए वैसे भी डिहाइड्रेट होते हैं, सर्दियों में और ज्यादा डिहाइड्रेट होते हैं. एंड विद करंट कोविड सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इज हम दिन में the Thus, best thing about pandemic which I feel very very happy about is people have learned how to wash hands correctly. yeah, मतलब we had to show people कि इतने देर हाथ इस तरीके से धोना होता है. So that now people are used to it and they are washing hands often, and that is also causing a lot of dry hand. Skin hmm. dry हो रही है, नाखून dry हो रहे हैं. नाखून are one thing. I have to just for a second rub my nose. I don't know what is irritating me. I might be having cold. I don't know. Hmm. So, so Change no, with sir. sanitizers, There is uh, wind mix हो रहा है. I could not hear you. I'm saying weather is changed suddenly. There is winter and there is sudden rains. So quite a bit of There not is pandemic, there yeah, is season change.
There is excessive hand washing, the weather is dry, and excessive sanitizing. So alcohol we know is dehydrating. आप Yeah. उससे हाथ धोगे, डिहाइड्रेट होंगे. Hmm. मौसम इतना ज्यादा ड्राई है कि आपके हाथ ऐसे ही ड्राई होने हैं. आप सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ पानी में करते हैं. Correct. आप नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने वेजिटेबल एंड व्हाट नॉट. मी बीइंग अ मॉम, आई एम डूइंग अ लॉट इन किचन. तो जितना आप पानी में हाथ डालेंगे उतना इट बिकम्स मोर ड्राई. Hmm. The back part of the hand is actually having no fat deposit. The skin is very thin. The Hmm. more it is exposed to water, it gets more dry. So this and the weather इकट्ठा करके आपके हाथों को काफी ड्राई कर देते हैं, आपके नेल्स को ड्राई एंड ब्रिटल कर देते हैं. अब इसका सुरक्षा उपाय क्या है? फॉर हैंड्स आई एम टॉकिंग, विल कम टू फीट लेटर. All सो right. व्हाट कैन बी डन? Ensure that every time you wash your hands, if you are in the office or you are outside, keep a small dabbi of moisturizing lotion with you and just apply it once you have sanitized or wash your hand, so that the hands start loving you and they work more for you. You will moisturize so the skin does not get dry. If you cannot do it every time, remember to moisturize your hand at least 3 to 4 times in a day. So सुबह एक बार आप, when you are stepping out of your house, when you are applying your creams or whatever to your face, please love your hands too. This women should know. Women, as compared to men, are 4 times more likely to have nail problem and hand problem and feet problem. Hmm. So that does not mean men do not work that much. Men are using things intelligently. They are wearing shoes correctly. They Yeah. are using hands correctly. They are not cooking so much. तो उनका हाथ कम खराब होता है. So and second thing, आप face को कितना भी कुछ कुछ कर ले, if you are not taking care of your hands, your age is going to show. Women who love to shy away from mentioning the numbers, then you should love to take care of your hands, Okay. because this is so this wrinkles very fast. Hmm. These parts, they Yeah. dehydrate and they wrinkle. So Okay. you need to give them enough खाना पीना पोषण थ्रू मॉइस्चराइजर, और आपको खाने में भी अच्छी चीजें खानी है. सो ये हो गया हैंड केयर की, प्लीज मॉइस्चराइज. सेकेंड थिंग, आप जब धूप में जा रहे हैं तो प्लीज यूज सनस्क्रीन. आपने मॉइस्चराइजर जब फेस पे लगाया तो आपने हाथ पे लगा लिया. इफ यूज अ डिफरेंट क्रीम, थिकर मॉइस्चराइजिंग लोशन, and use your same sunscreen. It's okay. तो face पे लगा, just apply it nicely from this part to the shoulder. Just cover yourself with sunscreen. So Okay. that is first step towards loving your hands, which do so much for you. Yeah. Apart from that, there are certain. This is my quick tip to women who cook. If you want to take care of your hand and nail, and you want to give them a lot of pampering, अगर you're used to kneading dough, आप आटा मलते हैं. I don't know how many people actually in this current time do it. I do it. So once you are done with kneading your dough, आप उसमें थोड़ा सा दूध या तेल लेके जो आटा चिपका हुआ है ना हाथ को, उसको slowly मसाज करके निकाल दीजिए. तो that is your sitting manicure every Wow. day. You can do it easily, and it takes care of your nails and the fingers, and you feel good. So So I'll. dry भी नहीं होता हाथ, and you get some oil and some nourishment. If you have nothing, just take a little milk और पूरे हाथ में लगा के उसको छुड़ाइए. This is how you just get rid of that आटा. Because आप पानी ही लगा के साफ करोगे ना, तो उससे अच्छा है आप दूध से साफ करो. You will moisturize your hand and they will get enough vitamins and microbiomes and some protein from the milk, and they will look nice and soft. So Such a this is one easy tip which I wanted to share. not shy away from taking this responsibility when mom gives me. Lockdown में करा है, but now if she tells me, I'm definitely gonna do it and remove it with milk. And I'm telling her for sure as well. ऐसा करना. Please tell her, because हम किचन में बैठे बैठे we can do a lot of things. At least once in a day I do make my roti, and I need the dough. I like everything fresh. I don't know make a dough for 5 days and keep. So it's a daily ritual, but Mhm. that takes care of my hands. ऐसा मुझे लगता है. Please. So now we'll come to the feet part. There is a person who's asking, my soles and hand get very dry, scaly Yeah. in spite of putting moisturizer. Please provide some more hydrating solutions. Okay.
Tanya, I want to ask you whether you suffer from some thyroid conditions and what is your weight, because that also decides. The this part of your hand has some fat pads. अगर आप बहुत पतले हैं या बहुत वजन थोड़ा ज्यादा है, तो in both the cases you might find drying in hands because essential fats are not reaching to the said locations. Okay. So अगर आप मॉइस्चराइजर लगाने के अलावा ensure that आप 3 से 4 बादाम रोज सुबह खाएं. So that will help. If you are fond of ghee, you can add ghee to your diet and eat good seeds. आप flaxseed खा सकते हो, almond मैंने बताया है, आप pumpkin seeds खा सकते हो. These are rich in omega-3 fats. आपको ये fats की ज्यादा जरूरत है. आई एम श्योर अगर आपका इतना ड्राई स्किन है तो आपके बाल भी झड़ रहे होंगे, तो इट विल हेल्प यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. ऑल्सो सी वेदर यू विटामिन ए, ई, सी, ये सब डेफिशिएंसी. नेल एंड हैंड का प्रॉब्लम ना shows that nutrients are not getting absorbed in your body properly. So if you have nails, अगर आप देखिए उसमें vertical ridges है लंबी लंबी and थोड़ा डल लग रहा है, that means you are low on iron and you are low on vitamin B's. आयुर्वेद में ये माना जाता है कि नख या नेल डायरेक्टली शोज योर बोन हेल्थ. एंड अगर आपका नेल्स ब्रिटल है और टूट रहे हैं या सफेद सफेद दाग पड़ रहे हैं, एक आध बार तो ठीक है, पर अगर हमेशा होता है तो प्लीज एंश्योर दैट आपका कैल्शियम भी बॉडी में हो. तो अभी तो मौसम अच्छा है तो आप थोड़ा सुबह की धूप खाएं एंड एंश्योर दैट आप आलमंड खाएं. एंड दिस अगेन आई टेल, विंटर्स में दही जरूर खाएं. दही इज अ विंटर फूड. गर्म होता है, दही ठंडी नहीं होती. बटर मिल्क ठंडा होता है, दही इज गर्म. तो आप इस सीजन में दही खाएं तो इट विल हेल्प योर माइक्रोबायोम टू, जो आपका पेट में बैक्टीरिया है, दैट विल प्रोड्यूस गुड विटामिन बीज. ये बायोटीन वगैरह आपका बॉडी ही प्रोड्यूस करके देगा. सो यू विल हैव गुड सोल एंड पाम स्किन एंड गुड स्ट्रॉन्ग नेल्स. तो कर्ड दैट विल डायरेक्टली कर्ड को गर्म करना है थोड़ा सा कि जस्ट डायरेक्टली खाना है, मतलब डायरेक्टली. आप कर्ड अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो ब्रिंग इट टू रूम टेम्परेचर. अदरवाइज जैसे आपकी मर्जी वैसे खाएं. कर्ड इज रियली गुड फॉर हेल्थ इन विंटर. जो दही बड़ा खाना है ना, जो दैट इज अ विंटर फूड. जो उड़द की दाल है वो गर्म होती है एंड इट इज वेरी हाई इन प्रोटीन्स. पीपल हु वांट टू पुट ऑन वेट, this is a right time to eat a lot of dahi vada and just put on good weight. And these are all good weight. You will not be obese and all. You will have proper nourishment, proper nutrient. In fact, उड़द की दाल से तो हम बालों को वॉश करने को कहते हैं if you have no luster in your hair. That's a little tricky thing. This is just an additional information. Please suggest something for painful cracked heels. Yeah. अंशी, सोनी. अंशी, आपका ये सिर्फ विंटर में होता है कि समर में भी होता है? यू नो, समर ऑल्सो कॉजेज क्रैक्ड हील्स. द समर ड्राइनेस कैन हिट योर हील्स ऑल्सो. सो अगर ये हमेशा रहता है तो आप हफ्ते में 1 से 2 बारी गर्म पानी में पैर डालें. और जब these cracked heels are because of excessive dryness, है ना, तो जब आप पानी गर्म करें उसमें थोड़ा नमक डालें so that the dead skin gets easily resolved. उसमें थोड़ा ऑयल डालें, कोई भी ऑयल. आपको ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, जो पसंद है वो डाल के 10 मिनट पैर में रखें. स्क्रेप इट ऑफ वेल एंड देन यू अप्लाई सम गुड फुट केयर क्रीम विच इज, हाँ, उसमें आप मोहा का फुट केयर क्रीम ले सकते हैं. आप जब लगाएं देन गिव इट अ नाइस मसाज पूरे पैर में, और जहां जहां क्रैक हील है लिटरली उसको भरे. एंड यू कैन यूज अ क्लिंग फिल्म, जो प्लास्टिक की वो नहीं आते अपने पैरों में लगाने के लिए, या तो सॉक्स लगा के आप रात भर सो जाए. क्लिंग फिल्म इसलिए कहती हूँ क्योंकि इट कीप्स द एरिया ह्यूमिड, तो आपका वो क्रीम आपका पैर और सॉफ्ट होता है. एंड डू इट रेगुलरली फॉर अ वीक. सुबह शाम दोनों टाइम लगाएं, हो सके तो 3 बार ही लगाएं. रात को आप लगा सकते हैं क्लिंग फिल्म, दिन में तो आप लगा के थोड़ी देर पैर ऊपर करके बैठे. इंश्योर दैट आप नंगे पैर नहीं चल रहे हैं. And keep wearing socks the entire day if you are walking without chappal. Chappals also don't help. Cracked heel ka one of the reason is the heels are exposed. You would know more, Sejal. You can throw some light on cracked heels, the causes for them. Yeah, so cracked heels, obviously winters worsen it up. Skin wise,
विंटर्स में ड्राई स्किन ज्यादा होती है, बट अदरवाइज ऑल्सो लाइक पीपल कैन कंप्लेन ऑफ लॉट ऑफ pain in heels, especially in winters, and otherwise also because of, we commonly call it as plantar fasciitis, which is like Yes, pain around the heel area, which is very prominent. ये जो पेन होता है, जो आप रेस्ट करते हो या रात को सोते हो, मॉर्निंग में उठते हो, तो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जो हील का जंक्शन होता है एग्जैक्टली अंदर की तरफ, दैट इज वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट. एंड इन सच सिचुएशन कॉजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे you have malalignment, like your pressures are not good when you're walking. Like general way of walking is heel strike, foot flat and toe off. अगर आपका बी कॉन्शियस, लाइक आप देखोगे अगर मिरर में तो आप चेक करोगे थोड़ा पैर अंदर बाहर जा रहा है जो नॉर्मल से ज्यादा है, देन डेफिनेटली योर you know that the fascia is getting pulled, which I'm talking about, and then the heel starts hurting. तो ये हो गया इम्प्रॉपर प्रेशर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके काफ मसल टाइट है या कोई और मसल्स जो लेग को वहां पे अटैच करते हैं, टेंडन वगैरह टाइट है, तो देन ऑल्सो इट गेट्स पुल्ड. So इससे there is a lot of inflammation on that area, and that's how we need to correct a lot of things, like going on to footwear, your pressures and stuff like that. And वो wrong pressure से आती है problems एड़ियों की, जिससे हमें cracked heel is one of them. So वैसे yes. comes about. Yeah. एक्चुअली रॉन्ग वे ऑफ वॉकिंग. और आपको पता कैसे चलेगा? आप 6 महीना जूता पहन के जब देखेंगे तो यू विल सी व्हाट पोर्शंस दब गए हैं जूते में. दैट विल टेल यू एग्जैक्टली वेदर यू आर वॉकिंग करेक्टली और नॉट. एंड मेनी पीपल हैव अ रॉन्ग गेट एंड सेकेंड रॉन्ग पोस्चर. ये सारी चीजें. एंड ऑब्वियसली जो वन ऑफ द रीजंस इज बहुत देर तक खड़े रहना. Women who are constantly standing for longer duration can have cracked heels. तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपकी हील्स पे पड़ रहा है और आगे फ्रंट पैड्स पे पड़ रहा है, तो कॉन्स हो सकते हैं, क्रैक्ड हील हो सकता है. तो ensure that you get some rest. Not that you should sit the entire day, but you should be standing for longer hours. Yeah. Keep If walking is in between can also help instead of standing at one point for a long hour, for long hours. Yeah, that works. So I think we also sorted how to deal with cracked heels, winter worsening the situation, which Neelam also asked us. And all questions later, I think. Yes, sir. Yes, doctor. So my soles yeah. and getting very dry and scaly in spite. Acha, we took this question. Um, so, dietary intake, mein you told us a lot of things. And what about the lifestyle change? Do we do anything specific? Like how you mentioned, one tip was to, you know, not stand at a particular, for long hours, particular place, just keep moving around. हाँ. फुट केयर के लिए ना एक चीज, आयुर्वेद में एक शब्द है पाद अभ्यंग. दैट इज पैर. पैर इज पैरों में तेल लगाना. यूजुअली हम कहते हैं कि रोज आप पूरे बॉडी में सर से पैर तक तेल लगाएं, बट इट इज करंट सिचुएशन में इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. बट इफ ऑन अ डेली बेसिस आप रात को पैर में तेल लगा के सोएंगे, सो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे नर्व्स वहां से पास होते हैं विच आर कनेक्टेड टू योर आईज एंड योर ब्रेन. तो अगर आप रात को डेली रात को मतलब 5 मिनट अपने निकालिए, और you can use any oil, coconut oil, whatever oil suits you, moha rejuvenating massage oil. आप उसको पूरे पैरों में लगाइए, मोजे पहनिए और सो जाइए. You will have good sleep, you will have stronger immunity, and you will not have refractive problems. In fact, अभी जिन बच्चों को आपके घर में चश्मे लगने शुरू हुए हैं thanks to this बंद होना and sitting at home and watching computer all the time and working on computers, for such kids also, मेरे पास तो एक छोटी कांसे की कटोरी है, and I'm the family masseuses. I have 2 kids, 2 boys and 1 husband, and everybody on a daily basis put their feet in front of me कि तेल लगा. So this is I do on a daily basis. So it takes 5 minutes. You just apply and massage them. You can do it for yourself as well, and it really is good for better sleep and reducing stress. If apart from that, there's one lifestyle change I want to suggest everybody. If you want to have better immunity, आप सुबह सुबह उठ के, अभी तो मौसम अच्छा है हर जगह पे, ये जो घास पे जिनके पास आसपास, if there is a place and playground where there is some grass, walk on green grass for some time. It is there are lot of research has been done on it. This is known as grounding or earthing. It is supposed to be कि we are
we have electrical impulses and they need earthing from time to time. तो आप जब चलेंगे, so it gives you a lot of electrons, which strengthen your immunity, remove toxin, release stress and all those things. So अगर आपको पैर का health चाहिए and better heels चाहिए, तो please walk on the ground. और ये मैं वात पित्त कफ 3 लोगों के लिए 3 तरीके से बोलूंगी. जो पित्त प्रधान है वो तो घास पे चले, क्योंकि वो ठंडी करती है. जो थोड़े से हट्टे कट्टे हैं एंड कफ प्रधान है, वो आप नॉर्मल ग्रेवल पे, आप इस पे बीच पे या थोड़े से रेती पे चल सकते हैं, नॉर्मल मड पे भी चल सकते हैं. एंड दोज हु आर वात प्रधान, दे कैन वॉक ऑन ग्रास और समथिंग विच इज वेरी स्मूथ. ग्रास इज वेरी स्मूथ. या तो रिवर साइड में, अब रिवर हर किसी को मिलती नहीं है, तो फाइंड ग्रासेस एंड वॉक ऑन इट. सो इफ यू वांट गुड ओवरऑल हेल्थ, पैर तो ठीक है, पर ओवरऑल हेल्थ के लिए दिस इज रियली गुड. Can you suggest a bit on hair fall? If we find time, I'll answer this, but we will take questions which are. So I have told you 2 tips कि आप पैरों को तेल लगाइए, आप सुबह चलिए, and बाकी तो ज्यादा मत खड़े रहिए. People who work out in gyms, please अपने जितना वजन उठा सकते हैं उतना. Don't try to overdo yourself. So slowly gain momentum in whatever you're doing, because end of the day आपका सारा वजन घुटने और पैर पे आ रहा है. This is going to suffer. Apart from that, exercise, keep your joints healthy, keep your feet strong. Do not wear a lot of heels. You will also agree, if you're a woman or a man, आजकल heel is common to everybody. Yeah. Do not wear एकदम flat चीजें. हाँ, flat एकदम मत पहनिए. पैर has a curve. So give it a little kitten heel. उतना दीजिए कि that curve is maintained. Otherwise, people एकदम ही flat चप्पल पहनते हैं. For that arc starts suffering, and then again you will have corns and calluses. Try not to wear plastic stuff in your feet. It is not good for health. It is a bad conductor of electricity, and I have told you, we are electrical people. We are electrifying people, and we need good conductance. Yeah. Wear leather. And invest, भले साल में एक बार खरीदिए, पर invest in good quality shoe and sandal. Heels पहनना है, सबको अच्छा लगता है. Wear it for few hours, and then when you come back, just stretch and flex a little bit, massage it well, and then sleep, so that your feet are not hurting much. Because people would know who wear heels, उनके पैर कितने दुखते हैं. It is like almost on your toes. 6 inches. Yeah, hurts back. It's very painful. फिर वो नर्व पेन, क्योंकि कंप्रेशन चालू हो जाता है. सो मेनी थिंग्स दे कम अप विद. बट वॉट एवर यू टोल्ड, मतलब मुझे आई वाज लाइक वाओ, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्लो टू कम, लाइक रिलेटेड टू कॉर्न्स, कैलसिस. दिस इज माय लाइक everyday thing. मतलब this is amazing whatever we discussed here, because ये सारी problems every day to day base पे हम face करते हैं, but we tend to ignore. Feet and hands are like the most ignored part. So आपने जो भी बोला अभी is like everyone ignores. Pain चालू हुआ याद आता है कि हाँ कुछ हो रहा है, अब देखते हैं. Otherwise, same with cons. Yeah. Cons के लिए भी जब तक वो दुखना ही नहीं लगेगा ना, तब तक we will not go. We will not even try. We'll soak it in water and try to just use a pumice stone or maybe a scraper and scrape it off. No, हम उसको बढ़ने देंगे. We will let it grow. We will give food and water, and then it will become very painful, and then it needs extraction. So if you apply oil or a foot cream on a daily basis, आपको कॉल होगा ही नहीं. And if चलो आपके feet smooth है, soft है, and everything है, तो भी हफ्ते में 2 बार लगाइए, so that आगे problem नहीं हो. This skin, when you are younger, you don't remember. When you become my age, you realize, अरे ये सब चीजें हो सकती हैं. So start taking care early. Yeah, that's so true. All right, some important tips for doing pedicure at home. Like all of us have started doing, a lot of DIYs, pedicure, manicure at home during this lockdown, and now I'm thoroughly enjoying it. Matlab, it doesn't give you any fear of any infection, and otherwise also when you're busy in your hectic lifestyle, thoda sa time if you can remove it and do it at home, nothing like it. Since you are the expert in this, I would love to know something like for this as well. Okay, there are 2-3 things. Before I go to pedicure, I'll resolve few queries which people might be having. Okay. What if we have a lot of fungal infection of feet when we are talking about feet? Yeah. So fungal infection of feet could be due to multiple reasons. कि आपने नहाने के बाद, हम
I have seen people will dry only that upper part. नीचे का part तो is राम भरोसे, it will dry on its own. So give 2 minutes more and dry your feet well if you are prone to fungal infections, because स्किन का पीएच एसिडिक होता है और बहुत एसिडिक होने पे फंगस होने लगता है उसमें. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप बहुत एसिडिक होने नहीं दें. इट ऑल डिपेंड्स ऑन फूड केयर यू टेकिंग. सो अगर ऐसा चीज होता है कि आपको फंगस बहुत हो रहा है, तो देयर आर 2-3 थिंग्स एट होम विच कैन बी डन. आप एलम फिटकरी होती है घर में, सो यू कैन सोक योर फीट इन फिटकरी का पानी. दैट इज एंटीपर्स्पिरेंट. जो बहुत पसीने आते हैं ना लोगों को पैरों में, हाथों में, सो दिस वर्क्स अ लॉट. यस, सो एलम वाटर या सिंपल एलम पाउडर आप उस जगह पे छिड़क दीजिए जहाँ पे आपको इन्फेक्शन होती रहती है. सो इट विल नॉट हैपन. Second thing, if your feet is very acidic and there is fungal infection of nail and fingers, even in hand or feet, आप बेकिंग सोडा में पानी में बेकिंग सोडा डालिए, गुनगुने पानी में 1 चम्मच से, छोटा सा डब्बा से 5 लीटर्स में 1 चम्मच, and soak your feet in it. So that makes the pH alkaline. So fungus stops growing. So baking soda stops the growth of this fungus which happens in your feet. So these are 2 tips which are very very important. I wanted to say, if nothing works, आप अनियन का, प्याज का जूस लगाएं जहां जहां इन्फेक्शन है. wear a sock and sleep. 2-3 बार करने से it will start subsiding. So these are few things which can be done for people who have fungal infection of the feet. Now coming to how do I do pedicure manicure at home. I'm not a queen into this. Though I would never do a facial or anything, but I do definitely go for pedicure. But since last 9 months everything has closed, so even I have developed few shortcuts to do pedicure at home. So this is usually a Sunday, and then if I am doing, I have to do it for my entire family. It's a line. So I have to really really quick. So take a tub of water, warm, nice, whatever suits your temperature. I add salt to the water and a little honey. ये मैं डालती हूँ because that moistures, that takes away all the dead cells. ये 10 मिनट रखने के बाद I just scrape it off and I nicely apply our Moha foot care to the entire feet and nails. 2-3 चीजें मुझे नेल पेंट के बारे में बतानी है. People who are fond of using nail paints, please remove nail paints after 3 to 5 days. Don't keep it for ages altogether because that will harm your nails. आप लोग इतना phthalate free and ये सारी चीजें पढ़ते हैं, but nobody reads what's there in the nail paint. Nail paint is full of phthalates and toluenes and formaldehyde, which are all not so great for nail health. It looks nice, it looks perky and interesting to have different colors, but if you are applying for 5 days, उसके बाद 5-6 दिन nail paint मत रखिए. Do not keep on applying nail paints again and again. Let your nails breathe. These are few tips I have to tell you. Don't put nail paint directly on your nails. That destroys it. Put a moisturizing lotion or some oil on your nail. हल्के से उसको gently rub करिए और finger से ही पोंछ दीजिए. उसके ऊपर nail लगाइए. Don't put a base coat or whatever. No. You moisturize it. उससे nail paint खराब नहीं होगा and it will protect your nail. So either you oil it, you can use don't use a nail cream, use a moisturizer or an oil. Any oil, Moha rejuvenating oil, olive oil, almond oil. Apply करें, उसको पोंछें और उसके ऊपर you just apply nail paint. So it stays and it does not harm your nails. These nail paints are very drying. I have to bring that to focus. The nail paints are very, very dry. So if you're doing it, you need to do manicure, pedicure regularly. Simple manicure तो आप इतना छोटा सा कटोरी में गरम तेल लें, उसमें आपसे सिर्फ nails डुबा दे, गरम in the sense not खौलता गरम, गुनगुना, and just remove it. If your nails have a lot of dark धब्बा or they are getting yellow, take a bowl of नींबू, मतलब पानी, नींबू उसमें डालें, 2 चम्मच नींबू का रस नहीं तो विनेगर, just soak your nails into that so that yellow color starts flowing off and also जो भी dead skin है वो निकल जाती है. What I tell people is do not pluck cuticle, do not push cuticle. It is there to protect your nails.
तो ये जो बैठ के हम खींचते रहते हैं ना कि इसको निकाल देते हो, इट इज नॉट गुड. डू नॉट यूज, don't use those sticks also, or cuticle remover. Cuticle is there to protect your nail bed. It is there to, it's a guard. And आप जितना उसको पुश करोगे आप उतना इन्फेक्शन रीइंफोर्स करोगे आपके नेल्स में, पैर में भी, हाथ में. सो ये सारी चीजें आप नहीं करें. सिंपल एक्सफोलिएट, हाँ एक्सफोलिएट रह गया. व्हेन यू सोप, यूज एनी स्क्रब. यू कैन यूज मोहा स्क्रब, यू कैन यूज DIY कोई होम स्क्रब ले लीजिए. I am getting all the calls on the planet. Can you hear me? Yes, I can hear you. Am I audible? Am I audible now? Yeah. Yes, you're audible. So, yeah. So scrubs are simple. आप एलोवेरा जेल में थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स करके पूरे पैर और हाथ में लगा ले. That's a good scrub. It is also whitening and tan removing scrub. If there is nothing, शक्कर ले ले, नींबू ले ले, mix करे and scrub it, and that takes care of your scrub. Scrub it, clean it, moisturize it, apply a foot care and a nail cream, and you're done for the day. These are simple things which you can do. रात को, संडेज को आप ये सब करें जब आप कोई मूवी देख रहे हो एंड आप लेट के नहीं देख रहे हो, आप सोफे पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, डिप योर फीट समवेयर एंड देन डू इट. एंड नेल केयर तो कैन बी डन एनीवेज. That's not much of. That's very informative. I think half of the majority of things are available in your kitchen itself to take care of your entire body. मतलब, Yes. we talked about skin की pigmentation, every problem. Now even nails and hand, मतलब सारी चीजें अपने घर पे available है. Just you need to know how to use it and use it rightly. Yeah. There was somebody asking me कि हाथ पैर में जलन होती तो हम क्या करें. It can happen. You have to find out the causes for it. You see whether you have any thyroid problems, whether you have diabetes. नहीं तो आयुर्वेद के हिसाब से जो पित्त प्रधान लोग होते हैं, people who have a lot of heat in their constitution, can have this burning sensation of hand and feet in summers and monsoons anytime. और so ऐसे लोग क्या करें. ऐसे लोग कुछ ज्यादा नहीं करें. एक तो चाय, कॉफी, अल्कोहल कम कर दें, पहली चीज. लाइफस्टाइल बदलें, रात भर नहीं जागे, दिन भर नहीं सोए. एंड जो चाय पीनी है तो आप सौंफ एंड धनिया का होल धनिया एंड होल सौंफ, उसको भून के यू कैन जस्ट बॉइल इट in a cup of water and have that chai subah sham, so that cools the entire body down. In fact, I tell this to everybody who's got any skin, hair major problem now. It is pitta related in Ayurveda, and cooling is a must, or balancing it is a must. So I tell everybody to have fennel coriander tea. अभी चूंकि ये चल रहा है सर्दियां, तो उसमें आप थोड़ा जीरा मिला लें. So that is good tea to have. That will start cooling down. आप उसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं रात को सोते वक्त. इट इज रियली रियली बर्निंग अ लॉट. या तो मेहंदी लगा सकते हैं, मेहंदी के पत्ते. दैट इज वेरी कूलिंग. सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच कैन बी डन. इवन कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन या आलमंड ऑयल एप्लीकेशन टू द फीट रिड्यूस, ये जो दाह है, जलन है, वो कम करता है. कैस्टर ऑयल इज अमेजिंग फॉर फीट. नाइस. मैं ना अभी ये जनरली बिकॉज टायर्ड की फीलिंग बहुत होती है एंड द फीट हैव बिकम ड्राई, तो मैं वो मोहा का अपना जो क्रीम है, फुट क्रीम, आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन माय सोल्स एंड आई एम रबिंग इट. उससे, बिकॉज इट हैज पेपरमिंट एंड ऑल, उससे भी बहुत अच्छी नींद आ जाती है. इट फील्स वेरी रिलैक्सिव. वेरी, सो इट्स अमेजिंग. अच्छा, सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग? No, you ask. मुझे, I was just going to questions. Like my question, my nails are actually very soft and they keep on chipping a lot. You know, बहुत बार मैं nails को break भी देती हूँ. मैंने पहले बहुत extensions करवाए हैं. Actually, I am guilty of it because अभी मुझे realize हो रहा है because now they have become little healthier than before because वो thin हो जाते थे and break करते थे. अभी they are better, but still थोड़ा सा टॉप कहीं पे चिप होने लगता है and I'm sure I'm lacking in nutrition somewhere or something is happening wrong. तो I wanted to know from you कि मैं क्या करूँ. Okay, आप तो पहले मोहा नेल केयर क्रीम लगाना शुरू करो. This I recommend everybody because of almond and flax that is present in it. It is nail strengthener. You need a little oil to your nails. It's a protein, keratin का बना हुआ है, and you need some oiling to it. So please use it regularly.
आप खाना, what are you eating, you look into that. I suggest everybody to have, I told you कि आप fruits खाएं. um, for hand, nail and feet care, vitamin A and vitamin E are very, very essential. Okay. So you find if you are a vegetarian, vitamin A you can find in gajar, in broccoli. If Yeah. you're a non-veg, you can find in almost every fish that you can have. Mm-hmm. So you have vitamin A rich food and vitamin E. Vitamin E, so I think you also must be suggesting a lot of people with feet pain. Yeah. So people are lacking in that. So आप vitamin E content, you get it from vegetable oils. Yeah. सारे oils में आपको मिल जाएगा, सारे nuts में मिल जाएगा. So vitamin A, E. उसके अलावा then you can add to whatever B complex. But आप अच्छी तरह खा रहे हो, and if you have good digestion, you don't need these supplements. But if it is not there, these days biotin is very famous for nail. If your nail is not good, as I have always maintained this, biotin is produced in your body. But since for some reasons if you are unable to make it, then you can have biotin from legumes and seeds. आपको उससे मिल जाएगा. अगर आप डेली दही खाएंगे तो बॉडी अपने आप थोड़ा सा बायोटिन बनाने भी लगेगा. सो हैव दैट. मुझे नहीं पता था दही. आई लव, मुझे तो दही छाछ सब चीजें दही की पसंद है. बट आई वाज अवॉइडिंग सिंस पास्ट फ्यू डेज. थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, बट नाउ सिंस यू सेड कि ये ठंडी की प्रॉब्लम नहीं देगी, देन आई विल कंटिन्यू एंड आई एम गोना हैव इट एवरी डे. See, who will have problems? किनको दही से प्रॉब्लम होता है वो भी मैं बता देती हूँ. People who constantly have cold. So dahi has one property. It's a little heavy to digest. That is why it is winter food. Winter में आपका appetite levels are better than other seasons. So Correct. anything which is heavy, it can be digested. Juices are good enough. And that is why dahi is winter food. And not you should not avoid it. कुछ नहीं होगा. Okay. If at all you're worried, add black pepper to it. ना अगर बहुत टेंशन है आप black pepper डालो, नहीं तो उसको एक छौंक लगा दो किसी, temper it with something. That is more than enough. Okay, perfect. That's amazing. I think I'm like all done. Like I have been covered with my questions for sure. Anything else you would like to add to this, Dr. Manisha? Nothing. I think we have covered. We have covered tanning. We have covered foot care. We have covered nail care. And somebody asked कि मैं बालों के लिए क्या करूं? मैं जो आप nail and hair is all connected. It is all related to your bone health. तो आप अच्छा खाना खाएं. आप 4 बादाम रोज खाएं. थोड़े से किशमिश खाएं. This is a season of strawberries. Go heavy on strawberries and grapes, and you will have good hair. Good hair के लिए you need that nourishment to reach there. So start having these things which are good for hair. That's it. Nothing much. Thank you so much for these amazing tips and facts and things. I have learned a lot in these sessions, and this was the last week. Tomorrow is just the last session we have pending. But truly, I would really say that Moha did a really great job. Congratulations, and thank you so much for having these live sessions for us. And thank you so much, Dr. Mishra, to help us out with all these things. And yeah, it was great. And guys, tomorrow you can stay tuned for addressing the same problems of nail, hands, and feet in an yoga manner, like how you can do different asanas to take care of it. We will sign off today, right? There's one question. I feel sad if I don't answer it. I have another problem. Ma'am, my question is, apart from today's topic, I'm getting lines under my eyes. Can you please help? Yes, Soumya. Lines under your eyes is first you get your chashma checked. Sometimes हम नहीं देखते and we squint a lot. आप ऐसे आंख दबा के कुछ नहीं देखे because यहाँ पे fat pads बिल्कुल नहीं होते हैं, तो lines फटाफट पड़ती हैं. Apply some good under eye gel. I usually recommend aloe vera gel with a little almond oil. आप रोज रात को लगा के सो जाए. It will stop this progress. अगर अभी fine बहुत fine है तो it will reduce also. And eat a lot of nuts. आप healthy fat खाएं. आप घी भी खा सकती हैं if you are okay with it. Otherwise almonds, walnuts, pista, ये जो अभी के season में है ना, आप सब खाइए. Avocados, please have them. They are good for your health. खाने से कोई दुख नहीं होगा. And just have them as they are. आप उसको भिगो के खा रहे हैं. Having all these nuts on a daily basis ना is anti-aging. आपकी aging रोकता है. Your skin will have enough oils, so wrinkles जल्दी नहीं पड़ते. वरना end of the day there are many other procedures with which you can get it removed. But try this first. Try it for good 1 month and you let us know
You can reach us on the Moha Life and leave in your questions or suggestions. We'll always answer them. And I have to thank the audience for connecting for last 4 weeks regularly. We are very, very thankful that you could join us. And it was amazing talking to you all. It was a great session. And thank you so much, Sejal. You have been a great host. We are very, very thankful to you, and we are thankful to everybody who has seen our programs. And I hope you are benefited from it. I'm sure about this. I am myself benefited, and I'm sure the viewers are so attentive, and they have asked us so important questions and directed towards a lot of things which we would not want to know. All of us want to know. Yeah. Right then. See you soon, Dr. Okay, bye bye. Yes, bye. See you soon. Bye bye. Bye.